हमारे साथ श्री राज भट्ट मौजूद हैं लंदन से बातचीत करने के लिए। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की बात करते हैं, जब यूएस मार्केट की बात करते हैं, हम यूरोप की बात करते हैं, आई थिंक यूरोप भी अगर आप देखें क्राइसिस से गुजरता था, लेकिन अब की स्थिति में और एक हफ्ते की स्थिति में जो परिवर्तन आया है, सेंटर ऑफ प्रॉब्लम जो ब्रिटेन था वहाँ पे सत्ता परिवर्तन। राज सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आई थिंक पहले इसी से शुरू करना चाहूँगा। ऋषि जी को ये कमान अब दी गई है, उनके आने के बाद वहाँ आई थिंक मार्केट्स ने थोड़ा बहुत तो चीयर किया, पर उनके लिए आगे की राह कितनी मुश्किल है और आने से उनके स्थिति कितनी बदलेगी, इस पर हल्का सा आपका एक पूरा अनुमान चाहूँगा। कैसे देखा आपने इस बदलाव को? देखिए, बदलाव इज वेरी गुड बिकॉज आपको फाइनेंशियली सेवी प्राइम मिनिस्टर मिला है यूके में, एंड वी नीडेड समवन हु अंडरस्टैंड द फिस्कल पोजीशन बेटर। बट उनकी जो सिचुएशन है यूके की बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज ये ब्रेक्सिट जब से हुआ है तब से ऑब्वियसली द ट्रेड विद यूरोप, आई वाज रीडिंग नंबर, is down by some 16%, and Europe is the largest trading partner for UK. And then we had the pound depreciation on the back of low growth and also the fiscal position here. So, he doesn't have any much headroom to borrow more. Borrowing हो नहीं सकती क्योंकि debt already 100% of GDP यहाँ पे hit कर गया है. Interest rate marginally नीचे आए because they were going up. They're running around 4%, 10-year treasury. And the interest payments are very high. So I think he is going to just try and maneuver this situation till for the next 2 years, because 2 years my election hai, and he will be the hopefully Conservative Party candidate for the Prime Minister for the next election. So it's a very challenging time. Just because he has come in here doesn't mean that he can solve the problem, because to solve the problem, you need some kind of maneuvering headroom. And we also have, हमारे को दो और इश्यूज इनको फेस करने हैं। एक तो नॉर्दर्न आयरलैंड का प्रोटोकॉल अभी यूरोपियन यूनियन के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, so that is a very big challenge. Then उसके बाद the Scottish referendum is on the back. They are asking for the independent referendum. So UK economy is going through a very big challenging time. Growth is not going to be there. Normally जब रिसेशन आता है, हमारे यहाँ भी रिसेशन है, तो गवर्नमेंट स्पेंड्स लॉट ऑफ मनी, तो पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ती है और दैट्स हाउ यू कम आउट ऑफ रिसेशन। अनफॉर्चुनेटली पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए बोरिंग करनी पड़ेगी, बोरिंग है नहीं, तो आई थिंक ही इज कॉट विद अ रॉक इन अ हार्ड प्लेस। बहुत चैलेंजिंग टाइम है, बट देयर वाज नो अल्टरनेटिव, बिकॉज आप किसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे यहाँ पे? एटलीस्ट ही कैन मैनेज दिस डिफिकल्ट सिचुएशन, एंड होपफुली कोई geopolitical situation ठीक हो जाए, Ukraine war, some miracle can happen, and he can do a trade deal with India, something like that, can bring some, good news for UK. चलिए, तो आई थिंक यूके की परिस्थिति को अभी स्पष्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। आई थिंक अभी तो सिर्फ अगर आप देखें सत्ता परिवर्तन हुआ है, महत्वपूर्ण निर्णय अभी होने बाकी हैं। अच्छा सर, अभी थोड़ा सा यूएस मार्केट पे फोकस करते हैं। राज जी, देखिए, आपने इस ट्रबल फेज की टिप्पणी आज से 3 महीने पहले भी की थी और आई थिंक 6 महीने पहले भी की थी, साल भर पहले भी की थी। यूएस मार्केट का प्राइस परफॉर्मेंस इस बार बेहद ही खराब रहा और इंडियन मार्केट्स और यूएस मार्केट के बीच में बड़ा डाइवर्जेंस था। लेकिन पिछले 10 दिन सर एक पुल बैक के रहे, और जहाँ पे यील्ड्स कूल ऑफ हुई हैं, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, आज रुपये में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है, यूएस मार्केट थोड़े स्थिर हुए हैं। आपको लगता है कि वर्स्ट हमने देख लिया है इस क्रम में, या फिर अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है? The worst is not behind us. ये बेयर मार्केट रैली जो होती हैं बहुत कन्विंसिंग होती हैं। जब भी बेयर मार्केट रैली आती है, एवरीबॉडी थिंक्स कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस। आपने अब तो बैड न्यूज आनी शुरू हुई है। दिस वीक वी हैड माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड फेसबुक, दे ऑल डिसअपॉइंटेड, एंड आई थिंक गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट had fallen by 7-8%, and this is high money. These are $2 trillion companies, and 7% fall in a company means $140 billion write off in the market value of the company. Facebook fell yesterday, I think 20%. So अब earning downgrade, which I was talking to, मैंने पहले आपसे बात की थी कि earning downgrade will be the next cycle of this capital markets. I think analysts will be forced to downgrade earnings. अभी भी earning
expectations high हैं analysts की. So I think we will see ferocious correction in the market. I still have the view, and we have not seen the worst. I think last time हमारा 3580 something. S&P is the best index to judge when you look at US. I think 3580, 3500, around that level it came. So I'm of the view that we will go much deeper in terms of correction. I would be surprised हम 3200 or 3000 hit कर रहे हैं S&P 500 में, and because we haven't seen that capitulation, VIX has not moved up, corrections, and there always a conviction क्योंकि market correct होती है, everybody thinks कि correction हो गया, it's a good valuation, but good valuation is based on earnings. PE multiple is all the factor of the earnings. Earnings are going to decline, and we also have a geopolitical risk. So I personally feel that we got big correction coming, and it might take another 4, 5, 6 months, and we'll have a major recession. Recession is not yet started. Started in UK. I think Europe also recession is we are already in. US will take some more time because they have tight labor market, and maybe another 3 months, 4 months we will see, or 6 months time we'll see recession in the US. And normally, markets when recession hits in, that's a time where markets basically bottom out. So हमको अभी I think 6 months to 1 year of volatility is there. Mr. And India is obviously holding on well because Indian earnings are coming robust. I mean, finally we are showing that we have consumer which is strong. We are not over leveraged. Our debt position is not bad. Our foreign exchange reserves are good. But with sentiments, India will also correct. But I personally feel that medium to long term India is a very good bet, very good investment. In fact, जो आप इंडिया की बात करें, मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ था राज जी. आफ्टरनून, भारत में फिर इस समय क्या पैसा कमिट करने का कॉन्फिडेंस है, कंसिडरिंग हमारी अर्निंग्स बेहतर है, हमारी इकोनॉमिक परिस्थिति इतनी शायद बिगड़ी इस समय नहीं है, और अगर हाँ तो कितना पैसा आप कमिट करेंगे? अगर अज्यूमिंग 100 रुपए लगाने हैं तो इस समय कितना रखें, कितना आगे डिप में और खरीदा जाए? देखिए, I'm India bull, if you can say, but temporary, let's say मैंने कहा था डिफेंसिस में ज्यादा मैं पैसे लगाऊंगा. जैसे मैंने आपसे पहले भी एक आईटीसी स्टॉक मैंने कहा था, आई डोंट नो कितने टाइम से, मैं 1 साल से आईटीसी कह रहा हूँ, फाइनली द स्टॉक इज डिलीवरिंग बेसिकली. So there are still value stocks in India, and the valuations in India are not stretched if you look at the earning growth. लेकिन stock market केवल fundamentals में नहीं चलती, वो sentiments में चलती. So sentiments west में negative होंगे यहाँ पे, इतना major correction आएगा. Sentiments will hit India also. So अभी I will be investing more money in the bonds and fixed income पे. हम यहाँ भी west में भी हम लोग fixed income पे आपको इतने अच्छे yield मिल रहे हैं आज, जो पहले कभी नहीं देखे हमने. लास्ट 4 डिकेड्स में बुल मार्केट में कभी करेक्शन आया ही नहीं. 1980 से शुरू हुआ था बुल मार्केट रन, 1922 में ब्रेक हुआ है, 21-22 में. एंड वी आर एंजॉयिंग दिस करेक्शन बॉन्ड मार्केट, सो वी कैन बाय A grade paper at 6-7% yield, which is unprecedented. So India maybe I think I would invest in debt and some defensives and wait for the correction to come in. I've been proven wrong because India market is very resilient. I thought India will correct, but it's not corrected. And medium to long term, of course, if you want to invest for long term, you can buy any time, But I would like to wait for some more time. Once the US market corrects, I think we will see correction in India. But India will be first, I think, market to bounce back after correction. अब आई होप हमारा करेक्शन इतना गहरा ना हो जितना डर शायद ग्लोबल मार्केट्स का है. अच्छा, जब आप जो यूके का जिक्र कर रहे थे, हमने बात, इनफैक्ट हमारे नेटवर्क टीवी नरेंद्रन से बात कर रहा था, जो एमडी एंड सीईओ है टाटा स्टील के, और उन्होंने साफ ये बयान दिया है कि जो ब्रीदिंग स्पेस है टाटा स्टील के यूके बिजनेस की, वो कम होती दिखाई दे रही है, और तुरंत प्रभाव से एक राहत पैकेज का इंतजार तो उनको है. नहीं होगा तो इंडस्ट्री बहुत बुरी हालत में होगी. ये टाटा स्टील के मैनेजमेंट की तरफ से बयान आया है. क्या आपको लग रहा है कुछ राहत वहां पर दी जा सकती है इंडस्ट्री को? दूसरी तरफ जो कंपनियां यूके में वैसे भी अच्छा खासा कारोबार कर रही है, जिसमें सोना BLW जैसी कंपनियां हैं, जिनका एक्सपोजर अच्छा खासा यूरोप में भी है, टाटा स्टील है, दूसरी मेटल कंपनियां हैं, उनको लेकर क्या पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अब कॉशियस हो गया है?
सी गवर्नमेंट के पास अभी हेडरूम का मतलब बिकॉज जो कोविड टाइम में इतना डेट बढ़ा दिया, दे डन एक्सीलेंट जॉब, जो स्कीम्स आई टू सपोर्ट फर्लो स्कीम, देन eat out, eating support for restaurant. I don't know, so many schemes they launched and the loans they given, so all those money has been distributed. Now our headroom is very limited. I think they have to fund the NHS. There's a lot of pressure there. They have to fund the public sector scheme, उनका high speed rail का आने वाला है infrastructure में. So it all depends. I am sure that वो अपना support जितना उसे करेंगे, but उनके पास headroom limited है. क्योंकि पैसा कहीं से तो आएगा, जो पैसा एक्स्ट्रा देंगे बजट में. ऑलरेडी इनका बजट में ब्लैक होल अभी 35 बिलियन का, कल मैं देखा 35 बिलियन का गैप है, विच डोंट नो कि बोरो करेंगे या कहाँ से लाएंगे. तो अभी ऑप्टिमिज्म, बिकॉज ऋषि सुनाक हैज बिकम प्राइम मिनिस्टर हु अंडरस्टैंड फाइनेंस, तो थोड़ा ऑप्टिमिज्म है, बट रियलिटी इज नॉट चेंज. रियलिटी इज स्टिल द सेम. वी हैव अ लेबर मार्केट टाइट, बिकॉज हमारा यूरोप से जो हमारे यहाँ फ्री लेबर मूवमेंट था वो खत्म किया, तो यहाँ काम करने वाले आने बंद हो गए, एंड उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं बढ़ा है. लेकिन ओवरऑल सिचुएशन, जैसे आप देखें रिटेल सेल्स देखें और सारे नंबर्स देखें, जीडीपी नेगेटिव हो गया है. सो सिचुएशन कैन गेट वर्स. आज लॉयड्स बैंक के रिजल्ट आए थे, व्हिच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट. आई थिंक दे हैव 27% मार्केट शेयर इन यूके, एंड दे मेड अ प्रोविजन ऑफ सम 600 odd million pounds का against the bad assets. So now the news is trickling in, and I think we will see very difficult time here also. And I think nobody wants to acknowledge that Brexit was bad. And then, of course, Ukraine war, we given money there also. So there will be pressure, more and more pressure, that how they're going to allocate this limited money they have. वो यूक्रेन को देंगे, स्टील इंडस्ट्री को देंगे, एनएचएस को देंगे, या इंफ्रास्ट्रक्चर में लाएंगे. अब जैसे यूएस में आप देखिए, अभी यूएस की हालत ज्यादा खराब है यूके से, लेकिन बिकॉज डॉलर इज सो डोमिनेटिंग, मार्केट डजंट केयर. लाइक बाइडेन ने $500 billion का डेट माफ कर दिया, व्हिच इज सच ए ह्यूज सम. कोई रिएक्शन नहीं, कहाँ से पैसा आएगा. यहाँ पे हमें लिस्ट ट्रस्ट का $40 billion का उसने टैक्स कंसेशन दिए, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ. So UK is being a small economy, and they don't have support of ECB, they don't have support of Fed, so they have to look after themselves, and they have many challenges. जो मैंने आपसे कहा कि अभी यूरोप के साथ नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल जो इनको एग्री करना है, that is one of big challenge. Trade deal with India, because India is also standing firm, demanding concessions, because US के साथ तो ट्रेड डील इनकी होनी नहीं अभी जल्दी में, जो उन्होंने कहा था. So कोई ट्रेड डील अभी हुई नहीं इनकी. They have done only with Japan, Australia, and New Zealand. India is a big trade deal they need to do. Then उसके बाद finally अगर स्कॉटलैंड में रेफरेंडम हो जाता है, अगर प्रेशर आता है अगले 2 साल, so that will be a big change. So they need to find money from somewhere. मुझे लगता नहीं है कि वो ज्यादा सपोर्ट कर पाएंगे बिजनेसेस को, क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा. बट जो उन्होंने कहा, बहुत शुक्रिया. यूरोप हो चाहिए. थैंक यू. यस सर, प्लीज कंप्लीट योर पॉइंट. नहीं, मैं कह रहा था, जैसे यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, अभी उनके पास फायर पावर है, बड़ा इतना बड़ा लार्ज बैंक है. दे कैन स्टिल कम आउट एंड फिस्कल बैलेंसेस. लाइक आपका इटली में 150% डेट टू जीडीपी है, ग्रीस में 200% है. ऐसी और कंट्रीज में भी काफी हाई है, लेकिन वहां पे मार्केट इतनी ज्यादा डिसलोकेट नहीं हुई है जितनी यूके में. यूके बीइंग ए स्मॉलर कंट्री, and they have to fend for themselves. So they will find it challenging, and only में कोई miracle हो जाए तो situation ठीक हो जाएगी war में या कहीं और, something else. Thank you. So that's the बहुत शुक्रिया. I mean, Europe, the US, भारत, तीनों पर्सपेक्टिव से आपने अपने व्यू रखे. बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. निकट भविष्य में आपसे फिर मुलाकात होगी.